वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। होप आप सब अच्छे कर रहे हो। कितनों दिनों बाद सर। गुड इवनिंग अंस। वाओ, समवन इज लाइव आफ्टर मंथ्स। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता है। किसी को भी जो भी डाउट्स है इन रिगार्ड्स टू द एनालिसिस, drawings, marking the levels, please do comment so that we can help you out in understanding the betterment of the analysis. Hi Nitin. सर करंट 15 मिनट्स की डिमांड कहाँ से निकली है? कहाँ से निकली है मतलब वेरी सिंपल। दिस इज योर प्रीवियस, convert your previous allocation into the current, right? So this was your current allotment. With the current allotment, redraw stability. With the redrawing stability, minimality M2 generation, double it 200% rejection. इंटैक्ट लेवल से मार्केट अभी एक रिजेक्शन ले रहा है. Till the time there is no setup formation, we wait. गुड इवनिंग उस्मान सर, कहाँ चले गए थे? ठीक है अंश, दिस इज द लेवल. WFC था यार. किसी को भी कोई भी डाउट है, कमेंट कर दो. could explain you out. Stream will be there for coming next 1 to 1.5 hours. Sir, why not take first come first serve? Nitin, what we use on a regular basis, we do the same, right? First come first serve. As you learnt in MNP, the same thing will be applied. What was the first allocation point? The first allocation point was the demand which got completed in the morning Asian session. Post completion of this, we got a three-wing setup created at this point, right? Post creation of three-wing setup, what is the next thing that we follow? We follow an allocation of supply. So first supply allocation kahan se loge? So this is your first supply allocation point, right? With this first supply allocation point, what you'll be doing first will be with the body, because there is no structure change, right? With this point of interest, what is the point that you will be allotted? 100% break and continue, 200% rejection, right? So with this, you come to know, okay, there is a rejection from 200%. So with this point of interest, what is the first demand allocation that you will be doing? Right? As of now, there is a structure change allocation. So we will be doing the same analysis over here, no? Supply converted into demand.
So this is my supply, which will get converted into my demand, right? So this is the allocation what we will be following, right? So post following this, whatever the allocation gets into the play, that is the allocation we carry forward it. Nitin, go through the video of conversion of supply and demand and follow it. So इसी के साथ what we did, we doubled it. We have the same demand over here with the same demand structure. If you want to follow the supply of the first, which is this, which will come into the play, right? With this play, what do we see? We see a minimality in the action over here, right? With this minimality of the action, 100% as first retracement point, हमें वो मिला था यहाँ पे. उस retracement के साथ continuity, what do we get? Whenever there is a minimality created, first target 150, second target 200%. In that perspective, 150 say market took a rejection over here. Sorry. From 150, market took the rejection over here and created a three-wing setup with S2B1, and market is following the demand part of allocation. Okay, Nitin? Sir, why not हो गया? अब daily आओगे? No, थोड़े दिन के लिए और break रहेगा, Usman, right? So I'll try to come from September second week regularly. Let's see. However, the time permits according to that. लिस्ट हो गए हैं क्वेश्चंस की बहुत सारे. यू कैन आस्क उस्मान. गुड इवनिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग. भाई आवाज नहीं आ रही है. हेलो हेलो. ओके नितिन. सर, इन योर ओल्ड live session, can you explain about inside liquidity? समझा नहीं उस्मान? सर, मॉर्निंग वाली डिमांड कहाँ से निकाली है? एक सेकेंड ना, कमिंग टू दैट पॉइंट.
Sir, may Rachit please explain retracement value, how to find 1 hour and 15 minutes time frame. ओके, मॉर्निंग वाली डिमांड कहाँ से ली थी? सो अलोकेशन स्पेक्ट्रम दो टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाता है. हंस फर्स्ट 1 hour एंड टू, देन 15 minutes. राइट, 15 minutes का अलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू starting with the rejection of minimality M to 200% say, right? So with the setup of intact level, you will be drawing. This is your reallocation of 200% demand. उसके बाद 1 hour में देखा जाता है through the previous allocation of reallocation, right? So इस point of interest में where do we take the demand from? The last setup. Where is the last setup? This was the last demand. So we use this demand in the current situation post breaking 200% of demand. So if you notice यहाँ पे 200% demand break हो गया था, तो 1 hour का demand allocate हमने यहाँ पे किया है. ठीक है, आपकी पुरानी वीडियोस देख रहा था, उसमें आपने रिवर्सल एरिया कैलकुलेट किया था, ऑल द गैप को एड अप किया था और उसका इनसाइड लिक्विडिटी कह रहे थे आप वीडियो में. ओके, यू वांट टू नो अबाउट द इंटैक्ट, राइट? इंटैक्ट अभी नहीं, राइट? यू गेट 100% एट द करेंट जोन. वो होने के बाद इंटैक्ट में जाएंगे, उससे पहले नहीं. ओके, इज देयर is no choke and viewers, if there is no choke and viewers, follow the surplus movement action plan. नितिन, ठीक है? How to identify the retracement value? Very simple, no? Calculated from the previous demand allocation, Rashid. जितना previous allocation होगा उतना ही current allocation के साथ drawback में allocate करके चलो. ठीक है? एंड अगर आप लोगों को एंट्रीज के ऊपर डाउट है, तो वेट फॉर अ सेटअप टू क्रिएट. S1 क्रिएट होने दो, नहीं तो S2 क्रिएट होने दो, उसके साथ ही ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देके चलो, उससे पहले नहीं. BTC हमारा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एक्शन से ही रिजेक्शन ले रहा है ना. इस क्वार्टर के क्या रूल्स है? इस क्वार्टर में बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर बेस्ड एनालिसिस, जो कि अगर क्रिप्टो में कर रहे हो तो सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड अलोकेट करके चलो. अगर गोल्ड में कर रहे हो, सेटअप क्रिएट होने के बाद ही अलोकेशन फाइंड आउट करके चलो, उससे पहले नहीं. ठीक है? सो एट द करेंट स्टेज जो हमने लेवल्स डाला था वहां से ही रिजेक्शन ले रहा है. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? स्ट्रक्चर अलोकेशन. स्ट्रक्चर अलोकेशन के लिए हमको 1 hour में BTC के लिए क्या चाहिए? वी नीड अ त्रिशूल फॉर्मेशन, राइट? जब तक त्रिशूल फॉर्मेशन नहीं होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू गेट? कंटिन्यूटी इन द मूवमेंट, राइट? जब तक यहाँ पे त्रिशूल बिल्डअप होते हुए नहीं दिखेगी, इन केस, राइट, क्या होगा? मार्केट मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेके कंटिन्यूटी में जाएगी. बट इन दिस सिनेरियो डू वी हैव अ त्रिशूल? यस, वी डू हैव अ त्रिशूल. सो यहाँ पे क्या होगा? मार्केट विल कंप्लीट द इंटैक्ट रेंज,
देन कंटिन्यू द मूवमेंट, राइट? तो यहाँ तक की मूवमेंट अलोकेशन पॉइंट आएगी, उसके बाद कंटिन्यूटी में मार्केट कैरी फॉरवर्ड होगी, उससे पहले नहीं, राइट? इन द सेम वे गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में लिक्विडिटी ग्रैप्स एंड लिक्विडिटी कैलिब्रेशन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जहां जहां तक मार्केट में पेंडिंग अलोकेशंस है, राइट, आप बने रह सकते हो एक डायगोनल मूवमेंट में, राइट? So just for an example, इस point of interest में what do we notice? We have a intact zone of liquidity calibration. So market का expectations वहां तक आने की होगी, उसके बाद ही continuity में movement दिखने को मिलेगी, not prior to that. Okay? So इसको ध्यान में लेके चलना उसमें. सर्कुलेटिंग सप्लाई को थोड़ा साइड में रखिए, इस क्वार्टर में उतना काम नहीं करेगा. इस बार ज्यादा फोकस लिक्विडिटी कैलिब्रेशंस, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी इंटैक्ट लेवल्स पे काम कीजिए, राइट? कीपिंग इन माइंड TTS 2.0 मस्ट बी यूज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. जब तक डायरेक्शन में है तब तक बने रह सकते हो इन द सेम अलोकेशन पॉइंट. ओके सर, मैं जस्ट गोल्ड ही फॉलो कर रहा हूँ. हाँ, गोल्ड में फॉलो कर रहे हो तो लिक्विडिटी ग्राफ इंटैक्ट लेवल्स जो बुक में लेवल्स है उसके हिसाब से फॉलो करके चलना. ठीक है? प्लीज आस्क द क्वेश्चंस जो भी है. किसी को भी कोई भी डाउट है प्लीज पूछो एंड गेट द क्लैरिटी. ऑल डाउट्स क्लियर? Where can I find full course, sir? Because there are some concepts that I don't understand. Sir, Wink considerations alpha ahead. Sir, Wick considerations alpha ahead. So what is Wick consideration? Wick consideration क्या होता है? So basically, whatever in the direction, right? So till the time volume isn't being generated when it is in the iceberg zone of 1 hour, always identify this,
right? In 1 hour, wherever there is a iceberg zone of action. 1 second. Right? So in this point of interest, wherever there is a iceberg zones, right, and there is a wick creation, don't look for it, right? So wick creation should be identified through the high volume zones only. Wherever there is a high volume, right? Market gave an indication at this point only that market is going to reverse, right? So with this indication, come to 15 minutes. In this 15 minutes, what you have to do, you have to wait for a setup, right? So in this formulative motion, we have an intact level. With the intact level, we do have S to B1 setup. With the S to B1, we have three wing setup. With this, you can look for an execution. Okay. So always at the 1 hour high volume zone only, you will be looking for an action plan, not prior to that. Clear, Nitin? क्या मैसेज था उसमें? Okay. Today opening value 3.30 value 3398.428 fake move. 5.00 value 3398 point. How to identify fake out previous day demand and supply. Guys, don't follow the mathematical calculations 1.0, which is used only in quarter 1 and quarter 2. Currently, we are in quarter 3, so use only mathematical calculations 2.0, which is TTS 2.0, right? So, mathematical calculations 1.0 will be used only in perpendicular of the movements which is being identified in quarter 1 and quarter 2, not more than that. Okay. So Rachit, please follow TTS 2.2 for an right directional movement allocating through the directions of supply and demand. मुझे S2 B2 and 3 wing continuation proper आएगा है but आता है बट सर थ्री विंग रिवर्सल में कभी कभी एसएल हिट होकर मार्केट रिवर्स कर रही होती है and more than three candles form होते ही any solutions. Very simple, right? Just for an example, एक directional movement है, right? उस directional movement में इस candle में या first green candle में या red candle में post allocation point आपको वॉल्यूम स्पाइक दिखने को मिलेगा. उस वॉल्यूम स्पाइक के बाद जो भी फर्स्ट इंटैक्ट लेवल आता है उस इंटैक्ट लेवल से ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देखिए, राइट? सो दैट द करंट रेशियो ऑफ योर एसएल हंटिंग विल बी स्टॉप. बट रिट्रेसमेंट जो ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. Retracement is same, right? Reversal point of action, if you are looking from the volume spike, first retracement will be inspective of the conversion. Supply to demand, demand to supply. You will look in formulative of this formation only. Okay. Rest all of the time, it will be in the followment. If you notice, this is a demand which followed through this demand, right? With this demand, this has come down to demand 200%. If it breaks this 200%, it will be a surplus of continuation demand which will be following with the current. But in this scenario, post this supply, we didn't had a demand anywhere because it was a directional movement. So at this point of action, what will you be looking at for first? Supply conversion into demand. Post conversion of supply converted into demand, you will be looking for a carry forward movement. Okay, Nitin. And Kapil, for you, we don't have any course, right? We have a book which you can use it to identify what we are doing.
Else not, you can go through the videos which is there in the home tab and use it for the reference. Okay, Nitin, I'm Kapil. Usman, hope you got the point of thriving. S2B2, you can let it go as of now because it's not required. Market is following thriving setup, and one more is S2B1 setups. So follow this two variation angle point and you're good to go for this quarter and coming quarters. Keep in mind of liquidity calibration. Keep in mind of intact levels for this quarter. Keep in mind of coverage of wick creation and high volume zone action point. अगर high volume generate होते हुए दिखती है, if you notice a high volume generation, that will be your reversal point of action from the nearest supply or demand. थ्री विंग रिवर्सल दोबारा समझा दीजिए, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है. वेट फॉर एक्शन प्लान. वॉल्यूम कहाँ पे हाई जनरेट होता है, चैप्टर 15 को यूज करो. उसके हिसाब से जहां पे भी रिवर्सल पॉइंट ऑफ इंडिकेशन जनरेट होते हुए दिखती है, वहां पे आपको थ्री विंग सेटअप जनरेट होते हुए दिखेगी. 1 2 3, राइट. Follow the chapter 16 and 15. कीपिंग इन माइंड हाई कैलिब्रेशन जोन को ध्यान में रखना है हमेशा. Anyone has any other doubts, please do ask. Stream will be there for next 35 minutes. In a long from 86.5 and 89.
Should I hold and look for a retracement? Should I hold and look for an add-on? Follow the MTSL and TSL. Keep your MTSL point of view over here, system trailing point of view over here. Sorry, opposite. MTSL over here, TSL over here. Okay. Sir, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ retracement after we break of structure or ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿತಿನ್ MNP ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. So use that as reference. Right? Break of structure ಆದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆನೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಪ್ಲೈ. Any other doubts guys? किसी को भी कोई भी डाउट है प्लीज डू आस्क. यहाँ पे इंटैक्ट पेंडिंग है, यहाँ तक के कीप इन माइंड people who are trading. 91 से लेके 92 तक का मूवमेंट पेंडिंग है अभी. CC, long time no see. Got busy with work, man. So whatever doubts you guys are having, if you have some doubts, CC, please do ask so that it will be easy for you to carry forward it. Okay. LTD is on. No. Till Monday, no LTD.
विसर्जन होने के बाद ही है नेक्स्ट एलटीडी। थोड़े कमेंट्स आए थे डाउट क्लियर कर दो करके, तो दैट्स द रीजन वी आर लाइव टुडे। ऋषभ कोई डाउट है तो पूछ लो। So expected the movement till the intact level, right? Yes, intact level तक देख सकते हो। तुम तो लॉन्ग में ऑलरेडी हो ना, एड ऑन देख लो इंटैक्ट लेवल से। सर एक्सप्लेन गोल्ड ओपनिंग वैल्यू हाउ to execute a perfect entry. See, there is nothing called as perfect entry, right? There is always called as perfect setup. What is it? You won't enter in the profile till the time there is a formation of S2B1. Wait for this setup, three wing formation. If not, let the market move and come back to the liquidity calibrated point of an intact. So these are the 2 point of actions you can look for an entry, not prior to that, right? So if you want a perfect entry, follow this, wait, don't enter in a running candles. So wait for it. Can you make a putting it all together video on this concept, which will help us to approach market? Definitely, we can make one of that. What is the name of the book and where can I find it? You can find it in Amazon. If you want any discount, just ask it in Trading Secrets, they will help you out. Okay? Telegram channel है या WhatsApp में पूछ लो. They will provide you with the discounts. Link is there in the description. जाके देख सकते हो if you want couple. Okay, I understood. Got it. Okay, Rachin. Right, just for an example, यहाँ पे क्या हुआ है, right? If you notice, there was a sudden movement. अगर थ्री विंग सेटअप के हिसाब से with the closure of demand execution नहीं हुआ है, you can't enter in this running candles, right? Where will you enter? Liquidity calibrated zone of intact. This will be your second entry point. So this is how you will look for an execution perspective. ठीक है? Same way, market took a rejection from minimality M2, no doubt. Right? यहाँ पे M2 से rejection यहाँ पे ली ही यहाँ पे ली, right? So the where will be your first entry? First entry will be with your setup. S to B1 setup के साथ यहाँ पे entry हुआ, right? Market slow and steadily went up again till the M2 zone of action. With the M2 zone of action, what do you notice? If your entry is over here, did it cross your SL zone? Let's check that. Right, with this point of interest, it's in 2.5.
राइट? एशियन सेशन के हिसाब से वही जोन ऑफ एक्शन में है। अगर ये एंट्री मिस हुआ है, then you wait for an liquidity calibrated zone. If you look for an entry over here, do we have an entry? No. What do we see? There is a huge gap in the candle over here. What did market do? Market came back to the zone of action of that intact. With that intact, market continued the movement till demand 150%. So हमेशा intact level liquidity calibrated zone में रहो, entry या setup के साथ S2P1 के साथ रहने। So this too should be your major lookout हमेशा। Okay. Any other doubts? Please do ask. Liquidity calibration zone. Thanks. Yes. So everyone, जो भी कर रहे हो, starting में screening करना बहुत important है. Screening is very much important while you are having a lookout for a day in trading. Keep that in mind. जब तक स्क्रीनिंग नहीं होगा तब तक ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देखना ही मत। क्लियर? स्क्रीनिंग होने के बाद फॉलो थ्रू 1 आवर, 4 आवर्स। 4 आवर्स आप लोग स्विंग नहीं करते हो तो 4 आवर्स देखो मत, 1 आवर एंड 15 मिनट्स में देखो। allocate करो सप्लाई एंड डिमांड। विद द सप्लाई एंड डिमांड अलोकेशन लुक फॉर अ वैलिड पॉइंट ऑफ अलोकेशंस, राइट? उसके साथ सेटअप्स क्रिएट होने दो। सेटअप्स के साथ be in the direction of the market which the mathematical calculation as well as the supply or demand is showcasing, that should be comprehensive with the action plan। उसी डायरेक्शन में बैठना। एक बड़ा रेड कैंडल आ गया करके ऑपोजिट मत जाना ट्रेड का, डायरेक्शन का, सॉरी। ठीक है? इस वन कैलिब्रेशंस एंड mathematical calibration 1.0 will be used only in Q1 and Q2. So current quarters में उसे भूल जाओ, S2 calibration use करो and use TTS 2.0 calibrations to identify the right levels. Clear? Again, we'll do the conversion of supply converted into demand matches. What is the next thing that we'll look for? The supply.
Yep, multiple times happened with me. Thanks, sir. Yeah, follow the levels step by step. प्रोसेस के साथ ही बने रहना, उससे पहले नहीं. So quiet. आप लोग क्वेश्चंस पूछो, जवाब देंगे. विनय भाई सब ठीक. हु इज विनय? कोई है क्या विनय करके चैट में? नहीं, कोई नहीं है ना विनय करके. वरुण है उसका नाम. डबल कर लेना सप्लाई को. सस्टेन होने के बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू होता है. Then we have allotted one of the point of contacts, which is 1 hour supply, right? We'll follow through with that.
सर आप आते हो प्रॉफिट सर आप आते हो प्रॉफिट होना आना शुरू हो जाता है होल्ड भी बीटीसी रनिंग ट्रेड डाउन ट्रेंड ग्रेट रचर कॉन्फिडेंस बताता है will AI disrupt all the manual trading concepts understand if AI comes into the play, the first and foremost key of executions will be conducted through the big management and hedge funds. Okay. So when they hold retail trading, what will be the first perspective that comes into the play? The first perspective is taking the assets of the retailers, right? So you should be always be very careful when you're in the allocation of a spectrum, right? So that is another 8 years, 9 years ahead, not anytime sooner. आपका डीपी में श्री कृष्णा है क्या? कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ग्रेट. कौन सा डाउन ट्रेंड में हो बीटीसी? ओके. लिक्विडिटी. Yeah. So it will take another 10 years for AI to play the role in the markets. What is spectrum? Shrikant H. A allocation point of dispersal. Sorry, depressal. Tongue twist हो गया. The allocation point of dispersal. बताता हूँ. In depth बताता हूँ. Yeah. In the allocation point of dispensive allocation, movements of a retailer which get into a spectrum point. Spectrum matlab wherever they look for a running movement allocation, right? That all gets into a spectrum trade-off point, right? वहाँ पे dispose होता है major liquidity allocations. जब मेजर लिक्विडिटी allocations disperse होता है उस point of action में there is a reallocation of liquidity which accumulates, right? With that accumulation the spectrum is formed in the zone. Yes. क्या क्या बोल दिया? डिस्प्रिंट, डिस्प्रमेंट. ये बिना विक का जा रहा है. 200% तो टारगेट हिट हो गया. If it continues, then 1 hour supply will come into the play. जो कि होना नहीं चाहिए at first place. Why it shouldn't happen? Because the movement of allocation of this moving candle where major retailers are sitting on the top of the break. So 200 point is the rejection where you will be looking for an intact zone of action.
Okay. Sir, what is your win rate in XAUSD? Beautiful, guys. So keep in mind, now we are having one more liquidity intact zone of action plan, which is this action point one. With this action point one, this is two. So two zone of major liquidity calibrating points is allotted at the current stage. Once the real allocation of completion of targets that could come back to the zone of action to hunt them out. Got it. So thank you. CCH 99% of 99.5 plus 99.9 कभी कभी फील होता है सबसे पहले इजाजत लेती है मार्केट मूव होने के लिए cool guys, anyone has any doubts? डिस्प्लेसमेंट अभी आया ठीक से उस समय पे टंग इतना ट्विस्ट हुआ ना can somebody help me? There are 6 playlists. Which one should I watch first or in which order? CC, that's in order only.
MC 2.0 supply and demand liquidity and volume. Let's see people. Guys, किसी को भी कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो. We'll extend it for another 30 minutes if you want. Happy Ganesh Chaturthi, sir. Thank you. Wish you the same. Varun.
सर मुझे S2B1 समझा दे, बस वही लास्ट बचा है, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। उसकी कोई लाइव मार्केट में एग्जांपल, लाइव मार्केट में एग्जांपल क्रिएट होना चाहिए उतना ही। जो आज के दिन में बना है वो दिखा सकता हो चाहिए तो, राइट। सो इफ यू नोटिस, एक सेकेंड ना गाइस, 2 मिनट के लिए रिमूव कर रहा हूँ। S2B1 के ऊपर पूरा चैप्टर ही है ना एक, वो फॉलो कर लो, राइट। आज के दिन में अगर नोटिस करते हो, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, एग्जीक्यूशन पॉइंट आज का दिन का, राइट। सुबह में कहाँ पे हुआ था, सुबह में 3 विंग सेटअप फॉर्म हुई थी। उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिला था, क्योंकि अगर आप थर्ड इधर बैठते ना, नोटिस कर रहे हो यहाँ पे विक ही जनरेट नहीं हुआ था। तो जो भी मॉर्निंग लेवल्स है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन थी, वाई दिस वाज द इंटैक्ट ऑफ लिक्विडिटी कैलिब्रेशन 1, 2, 3, राइट। सो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल पोस्ट द रिट्रेसमेंट जोन जो भी आता है, उस पॉइंट ऑफ एक्शन में आपको वेट करना होता है टू द अलोकेशन। टू द अलोकेशन मतलब मार्केट ऊपर जाके वापस आने दो, द थर्ड कैंडल हमेशा, राइट। बट द फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन, हमेशा याद रख लेना। एंड द थर्ड कैंडल शुड इंटैक्ट विद द फर्स्ट कैंडल, ओके। So if you want to see few more examples, I'll showcase you. What do you notice? Red candle नीचे आया, second, third candle क्या किया? It created a liquidity calibration with the intact. In this zone of action is where you will look for an execution. So this is S2B1, right? Same formation में यहाँ पे भी अगर notice करते हो, first, second, राइट। रिजेक्शन 1 2 3 मिला था हमको, 3 विंग, उसके साथ ही एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिखा था, तो यहाँ पे ही इंटैक्ट केस था, राइट, जो कि एसएल रेंज में ही थी। तो नेगेटिव में जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, एड ऑन इस जोन पे हुई थी। सेम फॉर्मेशन अगर नोटिस करते हो नीचे से भी, राइट, व्हाट डू यू सी, 1 2 3, थर्ड कैंडल wasn't impacted. What did market do? Market came back, created a liquidity calibration point. उसके साथ ही इंटैक्ट होके मार्केट मूवमेंट जनरेट की, राइट। सेम फॉर्मेशन 1 2 3, थर्ड कैंडल क्या किया, फर्स्ट कैंडल के साथ इंटैक्ट हुआ, उसके साथ ही बने रहना है हमेशा, ठीक है। सो दैट इज द फॉर्मेशन दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर। Yes, definitely sometimes you might not get that action plan. जैसे कि यहाँ पे अगर नोटिस कर रहे हो, ये मूवमेंट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि थर्ड कैंडल इंटैक्ट हुआ ही नहीं था। सो यू कैन लेट गो दिस मूवमेंट, राइट, क्योंकि उससे पहले यहाँ से ही बैठे रहोगे। व्हाट डू यू सी, 1 2 इंटैक्ट हुआ नहीं हुआ, व्हाट डिड मार्केट डू, मार्केट केम बैक, created the intact, with the intact of liquidity calibration point, market gave the movement. So first candle and the last candle of the third should always intact before the movement, ठीक है। On the break and continue, what we'll be doing, we'll be using the surplus movement. Surplus movement कहाँ का यूज करोगे, फर्स्ट एक्शन पॉइंट पूरा,
ओके सर, थैंक यू। मैं बैक टेस्ट करके नेक्स्ट सेशन में प्रोग्रेस बताता हूँ आप। ठीक है उस्मान। Sir, is knowing daily bias compulsory to execute this concept? No. Why we focus on the screening from the daily till the 15 minutes is because there are people who use the swing, right? There are people who look for intraday, there are people who carry forward the trade. For the carry forward of the movement, we look for a daily biasness. That's it. If you're using this concept and if you're looking for 100, pips, it's not difficult at all. Surplex. नहीं सरप्लेक्स नहीं सरप्लस PLUS सरप्लस मूवमेंट मतलब ये currently what we are looking at 100% rejection, right? So ये 100% rejection continuity में जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर नोटिस कर रहे हो ये दो डिमांड हमने ऐड किया है यहाँ पे, right? If it needs to break this, then अगर नोटिस कर रहे हो ये दो डिमांड है, करेक्ट, 1 2. So in this propaganda, what you will be doing, once this gives a break, you will have a carry forward movement. ये carry forward movement को surplus बोलते हैं, right? इस surplus movement को action plan में add करके we look for a intermediate movement of sustainability. Just for an example, अभी मान लो कि break हो गया, so we will allot it from this point, right? So in this point of action, this will be a minimality which will be acting at the current stage, right? With the minimality, if you look for a target allocating point, this will be your new allocation for the zone of today, right? A example है. So this is called as surplus, the surplus of a movement. मान के चलो मार्केट में सिर्फ 100 पॉइंट का मूवमेंट का प्लान था, बट मार्केट में 100 पॉइंट से सिंगल रिजेक्शन दिखा के कंटिन्यूटी में गई, राइट? सो 100 पॉइंट के ऊपर जितना भी पॉइंट्स हमें मिलता है वो हमें सरप्लस कैलकुलेशन पे ऐड करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज सरप्लस. सो उसके लिए इफ यू नोटिस विल बी हैविंग मेंशन्ड एज सरप्लस डिमांड, सरप्लस, दिखाता हूँ, कल एंड परसों के दिन में ही हुआ था. If you notice, this was the surplus minimality. जो हमारा मिनिमलिटी 200% यहाँ पे हो गया था, उसके बाद हमको यहाँ पे आके 150% में पहला सरप्लस पॉइंट ऑफ एक्शन देखा था. सो जितना भी मूवमेंट 200% कंप्लीट होने के बाद दिखता है उसे हम सरप्लस करके कहते हैं 150 एंड 200%. इफ यू नोटिस मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ, 200% से ही रिवर्स हुआ, राइट? सो द सेम प्लान ऑफ एक्शन, अगर ये मूवमेंट को अगर आप नोटिफाई 1 आवर में करते हो, ये पूरा एक्शन प्लान, दिस विल बी ए थ्रेशोल्ड इन 1 आवर, इफ यू आर नोटिसिंग, राइट? सो त्रिशूल फॉर्म होने के लिए नीचे आया था, त्रिशूल फॉर्म हुआ, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूटी है आउटरेज ऊपर की तरफ, राइट? अभी हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, फर्स्ट एक ड्रॉप एक्सपेक्ट करनी है, उसके बाद कंटिन्यूटी इन द मोमेंट एक्शन प्लान. Okay, so that is the surplus movement. Always remember, surplus is very much important in perspective of any allocation in the markets at any given point of time. कोई भी point of action में रहने दो, market follows a certain rules to comprehensive the movement action plan
prior the continuation. अगर नोटिस कर रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, 200% मूवमेंट हुई थी, राइट? सो उसके बाद क्यों एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड एज सरप्लस डिमांड? क्योंकि जितना मूवमेंट एक्शन प्लान यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे डेवलप हुआ, राइट? Hence that is called as surplus. I understood, got it. Thanks, no worries. Sir, will you be coming live every day? That's the biggest question I have to ask myself. I'm packed with MNPs and LTDs, man. आज विसर्जन और ये पूजा सब है ना, तो उसके वजह से थोड़ा टाइम था, तो आई थॉट we'll have one doubt session. तो in that perspective आ गया. Let's see, we'll figure out something. What's your full name, CC? Sir, ask for like na comedy.
Focus on your trade, Varun. You know that very well. We don't ask for likes and subscribers. If they are interested, they'll come. Arvind. Okay, Arvind. Any other doubts, guys? Suresh Babu, sir, same thing works in Indian markets? Yes, definitely it works. Suresh Babu, follow MC 2.0 and supply and demand in the action plan just to identify the movement action plans and be in that direction. Okay. Don't go for volume and calibration points in Indian markets. Use only supply and demand and MC 2.0. Sorry, TTS 2.0. ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे. Is there a Telegram group for discussions? No, Arvind, we don't use. Okay, sure. Thank you. सर कर दो ना बहुत डाउट्स आप. वर्षा इस पॉइंट को नोट कर लो.
I'm new member in this channel. Okay, Suresh. Welcome to the channel. Guys, stream will be there for next 15 minutes. Whatever doubts you are having, please do ask. Stream will close in 15 minutes. सर आपको इतनी फाइनेंशियल की नॉलेज है, आपने कौन सी डिग्री करी है यूनिवर्सिटी से? सो हमारा इसको डिग्रीज नहीं बोलता है. सो बिकॉज इंडियाज में डिग्री होता है, अब्रॉड में डिग्रियां नहीं. पर्टिकुलर channel certification बोलते हैं उसे. So I am certified from a culinary art. So degrees are only calculated in India. Yeah, it sounds like investment banker. When you run one, definitely you sound like one, right? Arvind? Great.
How did you know it will go up? ये मेरे चैनल में क्या पोल चल रहा है? Do you guys need a discussion group in Telegram? जिन जिन को भी चाहिए वोट कर दो यार. Because demand 200% complete हुआ था ना. If anyone is in the trade, simple MTSL यहाँ पे होगा. System trailing first intact level पे होगी. And जिनको भी डर लग रहा है, they can look for an exit as well. ठीक है? जिनको डर लग रहा है उनको. What is the next plan of action? Market sustains and continues. Minimality 150% is the next target. Okay. ये क्या बात हुई? क्या बात हुई मतलब? Guys, कोई भी डाउट है पूछ लो. Stream will be there for next 10 minutes only. You got mentorship too. Yes, sir, when we do. Okay, sir, thanks for giving us valuable time. Love that you are teaching.
Always welcome, Rachel. Not bad. You can ask in WhatsApp or Telegram, Arvind. They will provide you the brochures. कोई डाउट नहीं है किसी को भी? So I can consider the doubt session was helpful today. काय झालं?
सर टेलीग्राम डिस्कशन चैनल बन रहा है 13 होट से पोल में. लेट्स सी. यस. 114 मेंबर्स में से सिर्फ 12. नॉट वर्थ इट ना. सर इज MNP debt company as what, Arvind? No, MNP is a course name. LTD is a course name. Okay. Worth it for the interested ones. Yeah, it's worth it. इस कैंडल में भी विक नहीं है. Without setup, don't go towards short. हंस क्यों रहे हो रचित? For me, infinite worth it. Sir, I am on ICT concept since 1 year, still not profitable. Hope this works out.
Sir, please post this video in YouTube. मुझे 2 महीने तक वेट नहीं करना नहीं पड़ा। फिर मुझे 2 महीने तक का वेट नहीं करना नहीं पड़ेगा मैसेज का। समझ गया। ओके। सर आप तेलुगु हो? తెలుగు వస్తుంది बट मदर टंग मराठी है. మంచిది. థ్యాంక్ యూ అరవింద్. मराठी आपको आती है? हाँ आती है. खूप चांगलं येतंय. What is Manshidi means? Nice. You said you'll close the stream. I'm waiting for 4 more minutes. 2 घंटा हो जाएगा. Manshidi is good. Okay. Thank you.
सर नेक्स्ट लाइव सेशन की होप कब की रहेगी? बहुत जल्द। लाइव में कितना गया? नॉट बैड। 120 पिप्स. मला पण येते चांगलं. नमस्ते शेख. ईशान. वरुण सुबह से हो ना? हाँ सुबह से. खूप खूप. मला पण येतंय. ऑलवेज. कैन यू शो मी योर प्रीवियस चार्ट डिजाइन्स? भाई ये डिजाइन्स नहीं है, ठीक है, ये एनालिसिस है. Each and every analysis take rejection from my point of actions only. आप प्रीवियस पूछ रहे हो तो दिखा रहा हूँ अपना, राइट? So each and every drawing. आप कहाँ से बोलो वहां से? ब्यूटीफुल रिजेक्शन, हाँ. फर्स्ट लिक्विडिटी इंटैक्ट लेने आ रहा है मार्केट. गुड टू सी दैट. उसका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा 98. बट विदाउट इंटैक्ट नहीं जाना चाहिए. सर डेली लाइव सेशन आ जाइए. आई हैव टू रिमूव टाइम फॉर दैट मैन. हंस. वही तो मुश्किल है. हाउ टू नो ऑन विच कैंडल वी शुड एंटर? अंकुर, आज की इस वीडियो में ना, आई हैव एक्सप्लेन द सेटअप ऑफ एंटरिंग इन S1 and 3 wing, right? You can look into that perspectives and enter. Okay. So इस डिमांड को कैसे अलोकेट करते हैं? 200% ब्रेक इन कंटिन्यू हुआ है तो उसका प्रीवियस डिमांड कौन सा है? So this is the next previous demand, right? So you have to allocate that at the current stage. So this is the new demand allocation, what you can see. Majorly follow S2B1 setup and 3 wing setup only, Ankur. Okay. आपकी इंस्टाग्राम आईडी, हम एक्टिव ही नहीं है वहां पे. उधर ही है, देखो नीचे स्क्रीन पे.
S2B1, S1 कॉन्सेप्ट सिर्फ Q1 Q2 में काम करता है, यहाँ पे S2 सेटअप्स काम करते हैं. S2B1 is a positional allocation point which you look for a trade allocating to the substance of the previous. So आज के दिन में यहाँ पे हमें S2B1 सेटअप मिला था, राइट. लंदन सेशन पे यहाँ पे मिली थी, एशियन सेशन पे यहाँ पे 3 विंग सेटअप के साथ, राइट. अगर मेरे को शॉर्ट में जाना है तो मेरे को यहाँ पे रिवर्स पॉइंट ऑफ अलोकेशन दिखना चाहिए, 1 2 3. तब जाके मैं अलोकेट करूंगा एक सब्सटैंशियल मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जब वो हाई वॉल्यूम इंडिकेट करेगा 1 आवर में. जब तक वो 1 आवर में हाई वॉल्यूम इंडिकेशन नहीं दिखाती है, we will not go into the subcontract of entering into a trade. उसे हम S1B1 सॉरी S2B1 कहते हैं या S2B1 कहते हैं, right? So there are 4 setups. Majorly at this quarter you have to follow only 2 setups. One is 3 wing, another one is S2B1. S2B2 बहुत rare है, but जब भी आता है वो फॉर्मेशन विद एन इनसाइडर कैंडल विद 2 कंफर्मेशन कैंडल्स जनरेट होती है, उसके साथ दिखने को मिलता है. बट एट द करेंट स्टेज यू जस्ट हैव टू फॉलो 2. वन इज S2B1 एंड अनदर वन इज 3 विंग. ठीक है. So I wanna connect you on LinkedIn. There is one number popping out. You can connect on that if you want. Okay, sir. Thank you. I will contact you. Please reply. So please close the stream post this candle closure. It's a request. Okay.
तो डायरेक्टली मत डालो आप लोग, करेक्ट। कंटिन्यूटी में दिखने दो तब। आई थिंक इट्स अ सेल्फ फ्रॉम नाउ। अरविंद, ये मूवमेंट आने से पहले ही यहाँ पे अगर नोटिस कर रहे हो, ओनली टिल द इंटैक्ट लेवल। वी हैव टू इंटैक्ट्स। Sir, how long you are trading, means experience and which concept learned, any recommendations to community? I don't use any concept. I have my own concept, which is this what you see. This is created by me, you know. So I follow that. And experience wise, it's gonna complete 8 very soon. And this is purely based learning channel. Execution is all taken care by you, right? Levels डाल के दिखा देंगे, उसे फॉलो करते रहो, सीखो, एग्जीक्यूट करो। That's the only thing I can say. Sir, help me to unlearn ICT. What a request, huh? Bounding. Request bound the Arvind. Sir, I think it's MMC concept because I also learned this and I know. Beautiful, yeah. If you have learned it, happy for you. What is MMC? I don't know, man. Nice to see. No ego. MW back. Ankur, say me one thing. What will I do keeping ego? Right? यूट्यूब चैनल है कैंडल किंग के नाम से, वो बंदा यूज करता है एमएमसी पैटर्न्स। ओके, गुड टू नो। अंकुर एमएमसी अर्जुस,
यस एमएमसी कॉन्सेप्ट कैंडल किंग यूज करता है। ओके। मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। Mirror market concept. The sir using that line is might be created candle king. Nice. Ankur, this is a patented work. अगर कहना चाहते हो तो कि अगर हम किसी और चीजों का ऊपर काम कर रहे हैं ना, so it won't be possible because this is a patented work. We have a patented copy on this work. We have launched a book on the patented copy. Okay, sir. Sorry if hurt. Hey, why will I get hurt? पता नहीं था तो बता दिया. Simple. आप अपने बारे में कुछ बताइए. इतना टाइम नहीं है अंकुर. MTSL at 40 pips, right? Yes. एक चीज याद रखना वरुण, TP1 98 तक ही है. ठीक है, 98 से 97 तक. Keep the precisement on through the followment of the previous allocation of high volume. 1 hour का वॉल्यूम स्ट्रक्चर फॉलो करो.
So, everyone, keep in mind, keep learning and keep growing. Always remember, when you're learning, when you want to be something big or something wonderful you want to do in life, first you have to learn from where you're going to doing it. कहाँ से करने वाले हो? From that perspective, you're going to analyze it. So if you're looking that dream from trading perspective, first learn, do the back testing for 6 months, do the forward testing for 6 months. With forward testing, do 1 month of live analysis, then look for an execution. Let it be in perspective of any concepts, any strategies, anything. First, you have to understand what exactly you're looking for from what you're using. With that analysis, you execute the trades with a smaller amount, then compound that structure to a bigger one. With the structure allocations, look for compounding built in the real time analytical way through following the previous screenings of your risk to rewards, management of capital, and analysis what you're following through. Keep a journal where you can write down your mistakes and your executions, perspectives, what you go through on a day to day basis. With that, this is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय. नितेश signing off.